Okay, so a lot of you were requesting this stand-up comedy routine by Mohammad Hussain. I hope it's not just for bait's sake. I hope there's actual comedy in it. It might be because आप लोग मुझे recommend नहीं करते otherwise. So let's go and check it out. If you have a religious mother, you'll notice the way she talks is the same way Oh, a drug dealer wow. talks. One of my favorite things that they say about Muslims on the news is, ये मुसलमान लोग सब मिलके. I'm like मिलके. मेरी शादी होगी थोड़े साल हो गए. मैं दहेज. अच्छा, enough highlights, bro. It's fun, dude. It's fun being Muslim in this country, right? It's like an adventure sport. Every morning I wake up like, आज मेरी कौम ने क्या किया? Honestly, dude, न्यूज़ चैनल देखते तो ऐसा लगता है मेन कैरेक्टर एनर्जी तो हमारी ही है. It's kind of facts, bro. Kind of facts. No matter what the situation is in the country, the long division of the problem always results in Hussain. Like, Mia bhai. 2 + 2 is equal to Muslim. They always reach that conclusion. I love it. My only problem is in the news debates and all that. 7-8 बजे उनका प्राइम टाइम डिबेट होता है. वो डिबेट में कोई भी जो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें एक मुस्लिम अंकल आता है बात करने के लिए. Right? My problem is why that Muslim uncle always big दाढ़ी टोपी तखल्लुस से तकब्बुर कीजिए मियां. Facts, bro. Pant t-shirt like. You know what I mean? Like why always Bollywood की मूवी में भी हिंदुस्तान की आवाम को पैगाम. Who talks like this, dude? मेरे खानदान में कोई ऐसा बात नहीं करता. It's just how we are represented, right? I used to get very annoyed as to why we are represented like we are all from Lucknow. Recently, I found out the answer as to why that happens. Like 2-3 years ago, I moved to Mumbai, and one of these days in the morning, I went for a walk to Bandra Bandstand. मैं avocado खा के गया था. So you were allowed I was there. allowed to be there. And I met this small-time writer. I don't know if you guys would have heard his name, Salim Khan. Some of you, yeah, he's written छोटी-मोटी फिल्में जैसे कि शोले. Oh, best की उसका पूछ. बेटा कुछ एक्टर भी है. Oh, okay. I see कौन Salim Khan. I swear उसको गाड़ी की चाबी दे दो. He's like a deer in headlights. That's very funny. So that's Salim Khan, right? I saw him and I was like, oh my God, The Salim dad. Khan, I should go say hi. I was like with my Salman friend, I was Khan's like, dad. "Brother, Salim Khan, we should go say hi." He's like, हाँ, कितने आदमी आते कभी नहीं. वो जावेद अंकल की लाइन थी. So we went there, we shook his hand, obviously big fans, all that, right? He asked me my name. When I answered my name, his response is the reason as to why we are represented that way. He said, sir, big fans. He said, तेरा नाम क्या? Sir, Mohammad Hussain. He's like, आदा. I said, sir, आपकी वजह से मेरे को बैंड्रा में घर नहीं दे रहा कोई. You understand? Because he's like that. He wrote characters like that. Now everybody thinks all Muslims speak Urdu all the time. हम सब मुनावर जाकिर बन के घूम रहे हैं. मुनावर जाकिर. मेरा पूरा कॉलेज का जिंदगी ऐसा ही चला है. मेरे दोस्त लोग मेरे को आके बोलते हैं मैं लड़की पटा रहा हूँ थोड़ा ऐसे इसमें मैसेज में थोड़ा अल्फाज लिफाफा कुछ. अल्फाज लिफाफा. डाल ब्रो. थोड़ा हीरा मंडी डाल दे इसमें. थोड़ा हीरा मंडी. हीरा मंडी थोड़ा सा अदब. नहीं आती मुझे उर्दू. I don't know man. बोल तो रहा है. कुछ भी कहते हैं हमारे बारे में न्यूज़ पे. One of my favorite things that they say about Muslims on the news is whenever they're having their whatever they're having, they always start with this sentence. ये मुसलमान लोग सब मिलके. I'm like मिलके. Have you met Muslims? We hate each other. You think other people hate Muslims? Muslims hate Muslims. We get together every week to decide which Muslims are no longer Muslim. Fuck, he's right. Holy shit. This joke is for me to find out where the Muslims are sitting. Because everyone just realized, अरे तुम लोग same team में नहीं हो. And all the Muslims are laughing, ha ha, us. How many Muslims here make some noise? Right. Oh, इतने सारे लोग में 4. बहुत बढ़ रहे हैं. Bro. मैं जब भी सुनता हूँ ना, I'm like, yes, please. मेरा ऑडियंस बढ़ेगा, प्लीज बढ़ जाओ. Apparently they don't like your comedy, bro. I'll give you an example for those of you who are learning about this for the first time. I'll give you an example of how divided we are, okay? Let's say as a group, your favorite festival is Diwali. ठीक है? तो जब आपके घर पे दिवाली होती है, तो आपके मामा के, चाचा के, मासी के घर पे same day पे दिवाली होती है. You hear the 4 Muslims laughing? They know where this is going. Right? Reasonable expectation. Right? What's the Muslim equivalent?
ईद। तो जब हमारे घर पे ईद Yeah. होती है तो मामा के चाचा के मासे के घर पे सेम डे पे ईद हो, नॉट नेसेसरी, Yeah. क्योंकि चांद का मसला। Hmm. चांद का मसला, बेसिकली इस्लाम फॉलोज ए लूनार कैलेंडर। द साइटिंग ऑफ द मून डिसाइड्स द एंड ऑफ द मंथ। इसीलिए आप ईद के टाइम पे इंस्टाग्राम पे चांद वांद दिखने लगता है बहुत। दिस इज द रीजन। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज, आई से रमजान के 29th डे पे यू आर सपोज्ड टू गो आउटसाइड, लुक एट द मून। अगर चांद दिखा तो अगले दिन ईद, अगर सही। चांद नहीं दिखा तो परसों ईद। Day after, yeah. I'm simplifying, but basically that's this thing. Yeah. One full city of Muslims cannot come together to decide celestial body moon is visible or not. Every 29th Ramzan, चाचा और मामा फोन पे चांद दिखा नहीं दिखा, चांद दिखा नहीं दिखा। टीवी चालू, मुसलमान लोग सब मिलके। Oh, nice. Oh, good. अच्छा सेटअप था, premise अच्छा था, सेटअप बहुत लंबा था, but I guess it's a good payoff at the end. But he's so right about that यार। पता है इस दफा शायद मैंने नोट किया है कि दिवाली में भी ऐसी कोई डिबेट मुझे सुनने को मिल रही थी कि दिवाली है कि नहीं है। They weren't able to decide. I think something like that was going on. तो दिवाली कैसे डिसाइड होता है कि किस दिन है? If someone can explain in the comments कि how do you know कि आज दिवाली है या कल दिवाली होगी? Do you also go by lunar calendar or there's another way to figure that out? या सेट डेट होती है कि बस इस टाइम पे इस साल हर दफा होगी दिवाली। पाकिस्तान के साउथ में ईद पहले आ जाती है, नॉर्थ में बाद में आती है, या नॉर्थ में पहले आ जाती है, ईद में साउथ में बाद में आती है। सो पॉलिटिक्स के चक्कर में होता है अब तो जो होता है। मून सेलेस्टियल बॉडी, ब्रिलियंट एडिशन ऑफ दैट लिटिल वर्बिश देयर। इट्स अ सेलेस्टियल बॉडी, यू इडियट्स। सामने है तुम्हारे, इट्स अ सेलेस्ट, इट्स देयर, इट्स ईदर विजिबल और नॉट, यू कैंट एक्ट लाइक। सो या ब्रिलियंट ब्रो, बहुत। कब मिले? Where was this meeting point? What is this WhatsApp group? Nobody's inviting me. Crazy, man. It's crazy the things they say, dude, on the news. About one and a half year ago, in one of those hate speech get-togethers, मैं अजीब नहीं बोल, होता है। In one of those, one dude said something crazy. He said, we should kill everyone who understands the Quran. Oof. Right? Wild statement. I was like, whoa, brother, what and all you said? Kill everyone who What and all you I said? told my mom, look at what they're saying on the news. You should kill everyone who understands the Quran. My mom looked at the news. Oh, everyone who understands the Quran. So तू तो बच जाएगा ना नालायक? You're not Muslim enough to be murdered. Little sidetrack. That's what I've realized about religious parents. Like if your mom is very religious, no matter which religion you belong to, same life. If you really pay attention, if you have a religious mother, you'll notice the way she talks is the same way a drug dealer talks. I need him to explain this to रोज me. सुबह आके नया स्कीम है bro, once pray this prayer once bro, straight heaven. Heaven. मुस्लिम मदर, अब ये इंडिया में चल रहा है ये पॉपुलर जोक, तो अब तो मेरे दिमाग में आएगा। इट्स अ डार्क जोक बट यू नो gotta let it out. Muslim mother calling her son bro. There's some layers to that joke. There's some dark layers in But that you brought up joke. an interesting point, right? Like if the premise of the situation is understanding of Quran is equal to murder, then how much understanding is equal to how much murder? Right? What is the proportionality? Right? अगर तुम्हें सिर्फ 4 पन्ने आते हैं तो वो सिर्फ पैर काटेंगे. Like what is the cutoff to cut off your head? Of the cut off. Good job. Yeah, that's our thing, Do bro. they have Cutting an off. entrance exam? Like GMAT but G mat. Wow. Good wordplay. Good wordplay. That's the kind of shit I think about. I know थोड़ा dark हो गया. I'm sorry. We'll close this loop, this Muslim session, with a lighter joke. ठीक है? Let's talk about love jihad. Haha, you believe me? Love jihad, interesting subject. Not going to talk about subject for safety purpose. I only want to talk about how they talk about it on the news. ठीक है, न्यूज पे ये सीरियस मैटर अगर है, जो भी है उसके बारे में जब बात करते हैं, the way they talk about it I don't like it. The way they talk about it is always there'll be one dude who like, ये लोग हमारी लड़कियों को फंसा रहे हैं. I'm like, oh my god, no, stop. With their good looks and charm. I'm like, oh my god, no, stop. This is such a ridiculous argument. मैंने जब पहली बार सुना था ना, I couldn't believe they're actually saying this and people actually believe this. First of all,
वेरी डिफीटेस्ट एटीट्यूड. तुम अपने आप को अगली बोल रहे हो और दूसरी पार्टी के बंदे को स्मार्ट बोल रहे हो खुद अपने मुंह से. थोड़ी शर्म करो, थोड़ा अपने अंदर बिलीव रखो यार, थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाओ. किस सोच से आ रहे हो, किस एंगल से आ रहे हो, थोड़ा अपने आप में तुम मानो यार. तुम क्या करोगे, हम अगली हैं और हम सबको अगली ही रहना चाहिए. अगर लग रहा है कि अगली पार्टी के लोग खूबसूरत है तो थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लो यार, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन भी खूबसूरत निकलेंगी अगर तुम ऐसा मानते हो. मैं तो नहीं बोलता ऐसा है, बट इट्स सच अ डिफीटेस्ट लूजर मेंटालिटी ब्रो टू थिंक कि वो ज्यादा खूबसूरत हैं इसलिए वो हमारी लड़कियां ले जाते हैं. तब किस रॉन्ग विद यू, किस रॉन्ग विद आई एम हॉट. मैं हुस्न पड़ा. पर Their biggest complaint is इन लोग को सेक्स करना सिखा रहे हैं. कहाँ सिखा रहे हैं? कौन? Where is this coaching center? 4 साल हो गए शादी को, सिर्फ मैं खुश हो रहा हूँ. Suddenly sex joke came. No, you didn't expect. I know. Some of you might know I am married. How many married people here make some noise? You can hear it. You can hear them. You heard the marriage in their voice. इसकी खाला की बेटी पुप्पो की बेटी है ब्रो. किससे शादी की? I think people who believe in love marriage are stupid. Arranged marriage is best marriage. Love marriage, stupid people I believe. How many here believe love marriage? Make some noise. How Everyone. many of you single? You see? You see? नहीं मिल रहा ना कोई. Tinder, Bumble, Hinge, जीवन साथी सब चेक कर लिया तुमने. सबके पॉल खोल रहे हैं. मम्मी कौन सा रिश्ता? Get on my level. I don't know. My problem with people who believe in love marriage is how do you believe in yourself so much that you think this is possible for you? Damn. Also, It's a good observation. big decision, no? पूरा जिंदगी किसके साथ बिताने का है, right? Huge decision. इतना बड़ा decision मम्मी को लेना चाहिए. I feel like So he makes a good लायक case. नहीं हो. तुम्हें मुसम्बी और संतरे के बीच में फर्क आज तक नहीं समझा. नहीं पता गिल्टी. How are you going to decide who to spend the rest of your life with? It's a big decision, dude. I'll give you statistics. 3 out of 4 love marriages end in divorce. Wild, right? Crazy. 3 out of 4 love marriages end in In divorce. India? Only 1 out of 4 arranged marriages end in ye aurat pagal hai. It's a great. If you're a man, it's a great system. The fuck? See, I know थोड़े issues है arranged marriages में, ठीक है? पर ठीक है, दहेज वहेज मिलता है. Nice it is. Oh, sorry. Nice it बेटी की is. खुशी के लिए गिफ्ट्स. Yeah. Sure. मेरी शादी होगी, थोड़े साल हो गए. मैं दहेज मांगा था, उन्होंने ना बोला. बेशरम साले. Because they are Muslims. You guys know this? हमारे में मेहर का सिस्टम होता है, उल्टा सिस्टम. लड़के वाले उल्टा. लड़की को पैसा देते हैं. Yeah. My money is her money. Her money is her money. Our money is also her money. That's just how it is in Islam, bro. Right? I was also like, अरे we are Indians before we are Muslims. मेरे को मेरा आल्टो चाहिए. मैं मांगा भी आल्टो था यार, ऐसा BMW नहीं मांगा मैं. My meher was set at 75,000 rupees, which you know, that's fine. मैं शादी के बाद पूछा भी, baby 75,000 rupees, you deserve so much more. You deserve the earth and the moon and everything in between. Oh. Why do you ask for only 75,000 rupees? She looked at me and she said, वो अमाउंट मेरी औकात के हिसाब से नहीं. Fair enough, bro. Stand-up comedy करा. क्या comedians पैसा बना पा रहे हैं? क्यों? बैंक बैलेंस में बचा नहीं है कुछ. I think people who believe in love marriage are usually young people with hopes and dreams. Idealists. When you turn 25, they go away. उसके बाद मम्मी को फोन लग जाता है. नहीं हो रहा, मैं टिंडर पासपोर्ट भी खरीद लिया, मम्मी नहीं हो रहा. And to be honest, आजकल की डेट में in love marriage, arranged marriage, at least in metro cities, it's gotten to a point where ज्यादा फर्क नहीं बचा है between like arranged marriage में क्या होता है, तुम्हारी मम्मी डिसाइड करती है. Love marriage में टिंडर डिसाइड करता है. Who do you trust more, dude? Your mother who raised you, तुम्हारी टट्टी साफ करी उन्होंने, और some algorithm designed by some engineer जिसकी अरेंज मैरिज होगी. And engineers created Tinder. Still can't get any. How did you create the game and then you're the worst player at it? Like, तू इंग्लैंड है क्या? Like, right? At least मम्मी जब बायोडाटा दिखाती है, Underrated joke. तो जो भी इंफॉर्मेशन रहता है 100% accurate, 24/7, 365 days.
ठीक है, उसमें अगर लिखा है पूजा तो मिलने जाएगा 100% एवरी टाइम पूजा, नेवर राहुल। तू वापस आ गया है, राइट, नेवर। वहां पे फोटो लगा है, इट्स ऑलवेज फोटो लाइक दिस, नेवर पहाड़ का फोटो वंडरलस्ट, नन ऑफ दैट बुलशिट, एवरीथिंग इज टू द पॉइंट। लड़के की हाइट है 6 फीट है 4 इंच, लेना है तो लो वरना आगे जाओ। ब्रो लड़के के माँ बाप भी जाके बोलते हैं ब्यूरो में कि हम रेसिस्ट हैं, हमें गोरी लड़की चाहिए। हाँ ब्रो, ये बात तो सच के है। बाद थोड़ा चलेगा। They're savage. It's the facts. But they're But savage. bro. at least whatever the playing ground is, all the rules are set before you get into it, right? If you meet a racist father-in-law, mother-in-law, you are like, okay, racist father and mother-in-law, are they rich enough for me to compromise? Or should I say no to this relationship? शायद बेटा अच्छा होगा, वो रहता भी अमेरिका में है, right? You get to make that choice. Love marriage, तुमने कर लिया, फिर पता चला अरे मम्मी पापा तो रेसिस्ट है। Now what? Now you're stuck. You invested 4 years in this asset, and someone told you कि long term capital gain tax लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता। I'll just give you last attempt to convince you, ठीक है? Love marriage is like Vivek Oberoi. Stay with me. Love marriage is like Vivek Oberoi. Arranged marriage is like Salman Khan. They are both, but at least one is successful. Wow. And in this situation, Aishwarya Rai is happiness. वो दोनों को नहीं मिलती। वो मिलती है अमीर बाप के बेटे Really को। think about it, वो किसी को नहीं मिलती। Sad है। Ah, you missed out on that joke, bro. Damn, dude. Aishwarya Rai couldn't find love. You think you will? I mean, yeah, Right? facts, bro. Right? I mean, अब yeah, cause उनका scene That's खत्म हो गया not ना अब। Yeah, I get it. I get the joke. Hey, you've seen those reels, right? अरे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष। मनीष। Essentially the relationship. Is your name Manish? As soon as he said it, he's like, बैठा भी front row में, bro. Irony. hello sir, with the basic ass name. क्या करते हो मनीष? Tell me engineer, please. Says the guy whose name is Mohammad Hussain. हुसैन और मोहम्मद दो दुनिया के सबसे ओवर यूज मुसलमान नेम, उसको बोल रहा है बेसिक एज नेम मनीष। You're a scientist. Is it because your name was Manish? So you're like मेरे को कुछ अजीब ही करने का है, मैं engineering नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद Engineering करिए। Of course, Indian है क्या bro. scientist dude? सरफेस एनालिसिस करता हूँ मैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बोलता You're a nuclear scientist. हूँ। हाँ? वही मैं बाबा एटॉमिक रिसर्च। You're in Baba Atomic? Whoa, damn son. Dude, are you married? You're married also? Look at you living the dream. जो बात है bro. What's your name, ma'am? रुचि हाँ? रुचि रुचि आप इनके साइंस में रुचि रखती हैं? Let's go. I didn't get that one. बर्थडे उसको बहुत दे. Wow, dude. How old are you, ma'am? If you don't mind. 29 Oh, 29? I was gonna say 20. Good save. Because I was not gonna say that. My times are my times. Yeah, he's good. He's a good orator and he has good stage presence. ये जो लिखा है ना इसके बायो में, stand up comedian. I mean, I'm nobody to judge. Again, I'm not a stand up comedian. I can't claim ये है ये नहीं है. But like अभी it's hard to follow someone like मानिक माना. मैंने अभी मानिक माना को देखा थोड़ी देर पहले. कोई भी इंसान जो 10 out of 10 नहीं है वो मुझे हल्का ही लगेगा. So I guess there's some bias in my head right now. He did good jokes. Some jokes were very ठंडे. Some jokes were actually very smart. Good stuff overall. I thought it was gonna be something problematic, but it wasn't. It was based on his own observations, own experiences, so it was authentic. I like that about it. सच्चाई के बारे में jokes थे, अपनी life experience के ऊपर jokes थे, इधर उधर की बातें नहीं थी. I don't know man, मानिक के बाद आप follow नहीं कर सकते यार. मानिक बहुत अच्छा comedian है यार. उसके बाद आप मुझे नहीं करना चाहिए था. मुझे कुछ और देखना चाहिए था. उसके बाद मुझे इस पे आना चाहिए था. Maybe I would have better objective opinions about it. Right now it's so like I'm so comparing. मेरा mind is just constantly like ये तो अच्छा था पर वो कितना अच्छा था. ये हो रहा है मेरे दिमाग में. So yeah, but good stuff man. It's a unique topic, new topic. Not many people do comedy on this topic, so good stuff.